Welcome to another episode of Angry Monks. And today we have one of the most funniest, fattest, and weirdest person in my friend list, also in my WhatsApp block list, Mr. Avinav Shankar. Please, please do the honors of introducing me to our audience. I'm talking about exactly 8 people. बढ़िया बढ़िया एक so the guy who's here who just introduced me is none other than the stick man जिसके ऊपर कुछ खेती नहीं है पर With फिर भी that, with that so तन्मय इसका हाँ भूल गया था नाम भूल गया था भाई subscribe. So with that, what do you want to talk about today? तू अभी बोल रहा था कि तू कुछ रियूनियन कुछ देख के आ रहा क्या Friends reunion. फ्रेंड्स Yeah. मैं देखा था बहुत टाइम पहले देखा था पर इट्स समथिंग जिसके बारे में मैं हर रोज बात कर सकता हूँ इफ आई फाइंड राइट पीपल चैंडलर अराउंड अभी मी। कि चैंडलर मर गया ना तो सब निचोड़ रहे हैं उसको हाँ कितना कितना निचोड़ सकता है हाँ, पहले फीड में आता था ना आई यूज्ड टू लव इट पर अब अब थोड़ा सा कैसा मायूस टाइप फील होता है बिकॉज फॉर ऑल ऑफ अस हु थिंक वी आर फनी लाइक हम लोग का जैसे आदमी लोग वहाँ वो हम लोग का गुरु था चैंडलर मैथ्यू पेरी like Matthew वाज आवर Perry का गुरु। like yeah like, even before he was Chandler ना उसका अगर तो टेक्स दिखेगा ना he is like उसके रगों में कॉमेडी रगों था में है यार कॉमेडी नहीं है टाइमिंग like the टाइमिंग main thing is टाइमिंग और उसका sarcasm it is like अभी sarcasm लोगों को समझ में आ रहा समझ में आ रहा है डार्क ह्यूमर या है फिर वन लाइनर्स कमबैक्स yeah, like witty remarks like those it was नहीं होता था like okay if you were into reading then पुराने में चलो ठीक है ओब्रायन के राइटिंग में ऑलिवर ट्विस्ट कभी कभी होता था विटी रिमार्क्स है ना पर टीवी शोज में नहीं देखा जाता था इट्स लाइक स्लैपस्टिक चलता था है ना अभी भी चल रहा है स्लैपस्टिक इट्स स्टिल गोइंग ऑन और सरकाजम इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है ना होता है समझ में हाँ आता है एकदम एकदम 200% 200% इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट डिफिकल्ट हाँ मतलब you are it's like playing a gambling. You might think it's funny, your friends might think it's funny, but then for a lot of people it इट they जस्ट गोज ओवर हाँ द हाँ हेड it's go over the head वैसा ही but his jokes I never find it unfunny. एंड दिस वाज व्हेन वी वर किड्स वी ग्रू अप वाचिंग Yeah दिस थिंग्स and he kept this consistency for like 10 years dude 10 years even after नहीं नहीं like quitting वही बोल रहा हूँ friends ना and all नहीं उसका तो ये तो एक्टिंग नहीं है उसका ये तो hmm. पहले से ही था उसके पास It came naturally okay it came naturally for him but like Friends is one of the shows that we grew up watching right 90s shows right come on right one of the best like one of the best the best I have a theory also about I've Friends heard अच्छा हाँ बोल I have a theory about it Friends can I but okay चलो तू now बता now तू that we बता are talking about channel ना उसके बाद में what I have heard is कि Chandler मतलब Matthew Perry was the only one who was allowed to sit with the writers and like write jokes and with the scripts and all. okay He was the only one. really Yeah. I guess yeah most probably his improvisation was pretty good right तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना You were saying that you have a theory about नहीं चल Friends title. भूल गया भाई No, before we started this, you were saying कि like you have a theory about how Friends got the Friends का title. नहीं मतलब You zoned out. एक जोन डाउन लेकिन वो चले होता है कभी कभी ये होता है ना कि like टाइम में आता है दिमाग में आता है अगर नहीं बोल पाता हूँ ना इसलिए फंस गया उसके बाद you cannot concentrate on the next topic as well. Like if I start something new now, you'll be like yeah पर उसका पीछे वाला टॉपिक में ही दिमाग अटका हुआ रहेगा. नहीं कोई नहीं चल we'll stick to the same topics maybe it's going to come back okay तो 90s shows के बारे में बात करते हैं 90s shows में तू क्या क्या देखता था Indian हाँ Indian में I have very vague memories about a lot of shows like Captain Vyom, Hatim Tai, G for G माने junior G शक्तिमान तो बोलने का शक्तिमान जरूरत यार नहीं है everybody knows about that. क्या क्या What else? Sanju
Sanju ka magic pencil. What was the name? Sakalaka Boom Boom. Shakalaka Boom Boom. And then Karishma there Ka was Karishma. Karishma Ka Karishma. That was Sold actually a adaptation from a Western show, na? adaptation. हाँ Adaptation चोरी हाँ नहीं किया है, adaptation है, हाँ हाँ वो पता है. adaptation है. We Indians do not Yeah, we steal show. Indians, we don't steal anything. Yeah. Karishma Ka Karishma was there. Small Wonders. Small Small Wonders. Wonders. उसका remake नहीं, adaptation था. Adaptation. Highly inspired. नहीं adaptation बोल देते हैं Indian language में, हिंदी में. हाँ. सोन मेरे को परी. याद नहीं आ रहा है मतलब कौन सा सो वाला वो स्मॉल वंडर्स का इंडियन वर्जन कौन सा था. वही लड़की रोबोट होती है, ओ like अच्छा वही तो हाँ हाँ करिश्मा का करिश्मा. करिश्मा का करिश्मा. हाँ वही तो करिश्मा का करिश्मा. वो करिश्मा हाँ हाँ वही. कितनी बार बोलेगा हाँ ये चीज़? अच्छी वो लगती थी क्या अच्छा हाँ करिश्मा? वो नहीं नहीं ऐसा नहीं तभी तो बहुत छोटा था यार. वो लड़की भी तो छोटी थी. नहीं तभी के हिसाब से we were like I was younger than her. That's what I feel कि हाँ. हाँ पर अच्छा था वो अच्छा तभी के टाइम में एडेप्टेशन अच्छा हुआ करता था. शोज भी अच्छा हुआ करता तो था भाई यार. लाइक लुक एट शोज लाइक मोस्ट ऑफ दोज जो आया था हमारा अमर चित्र कथा से आया था, है ना. और जैसे कि विक्रम बेताल है ना. विक्रम बेताल बहुत आई यूज्ड टू मैंने वेट फॉर देखा दैट. नहीं है अभी मैं मीम्स वगैरह देखता हूँ तभी के टाइम में आई हैव नेवर वॉच्ड विक्रम दूरदर्शन में बेताल. आता था जब मैं छोटा था, दूरदर्शन में आता था. आई यूज्ड टू वेट संडेज दिन में, क्योंकि बाकी दिन में तो स्कूल रहता था. संडेज में आई वुड जस्ट वेट. एंड ये साई साई ये साई समिति वो सब जाता था दिन के टाइम में. उसके बाद वापस आया. उसके बाद आई यूज्ड टू सिट एंड वॉच विक्रम बेताल. द रीजन बिहाइंड इट वाज द लॉजिक दैट ही वुड पुट. द कॉन्सेप्ट वाज कि एक विक्रम इज सम वाइज पर्सन ना, बेताल कुछ स्पिरिट वगैरह कुछ है. अगर इंग्लिश में बोले तो रेत जो होता है. तो वो आके विक्रम को पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुझे खाऊंगा. ठीक है. तो उससे पहले मैं तुझे एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तू जवाब नहीं दे पाएगा तो मैं तुझे खा लूंगा. So this was the gist of the entire show or like this happened This happened frequently. Okay. Okay. That was the main thing. Okay. So Vikram was just traveling. This spirit just saw Vikram. एंड जो स्पिंक्स का जो है ना नेचर पता है ना स्पिंक्स का कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ यू आंसर देयर स्पिंक्स विल अलाउ यू. वैसे बेताल का भी था, क्वेश्चन पूछेगा, अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो खा लेगा. ओके. और फर्स्ट टाइम वाज एक क्वेश्चन पूछता है, विक्रम आंसर दे देता है, तो बेताल उड़ के भाग जाता है. बट नाउ ही हैज दिस मतलब बेताल का ग्रज वेंडेटा बन जाता है मतलब इसको तो मैं खा के रहूंगा. विक्रम becomes the nemesis of बेताल. इसको तो मैं खा के रहूंगा कैसे भी करके. कितना टाइम के लिए चला था ये शो? आई एम नो आइडिया. बट स्टिल लाइक कितना 2 साल 4 साल 5 साल बहुत चला. बट देयर वाज लाइक रिपीटेशन होता था. इट वेंट फॉर अ व्हाइल. रिपीटेशन भी होता था बहुत से एपिसोड्स, यू नो. बट now I want to go back and like कितना चला था. I want to research those things. पर सही concept था. Maybe those things had to be. अच्छा था. It was fresh. It's not fresh. Like not just fresh. It was way better than छोटा भीम. Like छोटा भीम का पहले का ठीक था. अभी देखा है. छोटा भीम is like वो जो added sugar होता है ना हर चीज में, खाने पीने में. हाँ. It's very harmful. मेरे को ऐसा लगता है. आजकल का जो भी कार्टून्स वगैरह, it's very harmful for the kids. Obviously, Augie and the Cockroach. Augie and the Cockroach is still fine. No. Still fine. Like there is humor at least for, मतलब you will find it funny. At least one joke in an episode. ये सब cringe worthy, मतलब अनाप शनाप, like you are showing it to kids and then you are showing that Chutki is in love with Bheem is in love with क्या फीड कर रहे हो यार आप अपने बच्चे को. Exactly. The moral value of the shows has gone down. Gone below. कुछ नहीं. They just want to sell PR level के लिए. You know, सब. That is what I'm trying to say. जैसे कि do you remember Captain Planet? Yeah. जब मैं ICC में था, मोरली कितना सुंदर तरीका चीज दिखाया उसमें. लाइक यू मतलब every element of the environment is like a superpower. If you save them, you will have a wonderful environment. कितना सुंदर. यार, I think by the time I was like a 4-5 year old, I already knew what global warming was. Yeah. And it was not because स्कूल में जाके पढ़ा भाई. Captain Planet. इतना दिखता था. अभी भी मुझे लाइक पता है, कैप्टन प्लैनेट इज द हीरो. तेरा हिंदी में था, मेरा इंग्लिश में था.
क्योंकि तुम लोग का उधर शायद वो कर्सियों का वो पकड़ता था ना नेटवर्क वगैरह। हाँ, हाँ हिंदी में नहीं आता था। हिंदी में हाँ। बहुत लाइक व्हेन आई वाज बाय कितना क्लास 9 क्लास 10 तब हिंदी आया था। तभी का ऑडियो डब वाज वेरी मतलब अच्छा, मजा आता था देखने में। अभी का जैसा नहीं है जबरदस्ती अरे नहीं। ऑडियो डब में तो मेरा मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट तकेशीस कैसल, तकेशी का जावेद हाँ, जावेद जाफरी। जावेद जाफरी की वजह से। उसके बारे में पता है, भुवन बाम इज डूइंग न्यू ऐसा करके, नया करके, तकेशी कासल। हाँ हाँ हाँ, सुना है। हाँ, पर मेरे को नहीं मन किया देखने आई का। हैव नो आइडिया आई व्हाट हैव इट नो इज। आई फेथ कि वो इंसान फनी निकाल सकता है। नॉट दैट ही इज नॉट फनी, बट हम लोग का दिमाग आई में डोंट। हाँ किसी और को चला जाएगा वो। उसको मतलब किसी और, मतलब जिन्होंने तकेशी कासल जावेद जाफरी वाला नहीं देखा है, हाँ। उनको शायद फनी लगेगा, हम्म। पर हमें नहीं लगेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि फॉर अस लाइक जावेद जाफरी इज द चैड। दिस जस्ट रिमाइंडेड मी यस्टरडे, एक मुझे शॉर्ट्स दिख रहा था, उसमें एक है ना, दिस कोरियन गाय, तो मूंछ वूछ है, बाल बाल, पॉडकास्ट वॉडकास्ट भी करता है कोरियन उसका। का मुझ भी होता है। उसका है, होता है। आई एम गेसिंग ही इज कोरियन, आई हैव नो हाँ। आइडिया, सॉरी इफ ही इज नॉट, बट आई डोंट नो हिज नेम। आर यू श्योर ही इज नॉट कैरेलियन? ना ना ना, व्हाटएवर। स्पेसिफिक भी नहीं जाना मुझे, आई नो व्हाई ही इज कोरियन, एनीवेज। तो दे आर टॉकिंग अबाउट karate kid, okay, and this guy द is ओल्ड like, वन और द न्यू वन? exactly, listen Oh, पहले अच्छा। पहले listen. So स्पॉइलर अलर्ट। so this guy is like talking about karate kid, and there's the young girl is there, they're playing badminton or tennis or something, and they're talking about karate kid, okay, and he says, you know, I was in karate kid, I was the Mr. Miyagi, and the girl's like, are you Jackie Chan? क्या Okay. दिमाग का भोसड़ा हुआ होगा उसका, वो he was like आदमी he का। was like लाइक took a step back and like no no, fuck this life बोल के ऐसा he हुआ। went straight to her face, हम्म। that उसके साथ रैकेट के साथ, ठीक है, can you repeat that? वो मारने के लिए तैयार था, and she was like, हाँ, karate kid with Jaden Smith. Then he was like, ओ अच्छा। वाला scene आता है ना। इट्स नॉट देयर फॉल्ट एक्चुअली आज का ऑडियंस का, क्योंकि जब व्हेन आई वॉच करट किड नया वाला फर्स्ट टाइम ना, उन्होंने एज अ ट्रिब्यूट ना कोई सीन को अच्छे से मतलब, जैसे साउलिन सॉकर में, साउलिन सॉकर इज अ लेजेंडरी मूवी। जब Stephen Chow is a हाँ legendary guy. हाँ, Come तो on. सांची जब निकला, Hmm. सांची में देर आर फाइट्स, देर आर कैमरा शॉट्स एकदम एग्जैक्टली रिजेबल्स टू साउलिन सॉकर। तो Hmm. वहां पे समझ में आता ना, तो क्योंकि सांची का तो ऑडियंस पुराना भी है Not, और not नया भी just है, not मोस्टली just नया है। तो नया वाले को वो पुराना कॉन्टेक्स्ट दिखाने के लिए इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द न्यू फिल्म मेकर्स कि वो अपना शोकेस करे कि हाँ connectivity दिखाया. कि ये कहाँ से आया, Hmm. कराटे किड, वेयर डिड कराटे किड केम फ्रॉम, वो दिखाना चाहिए था ना। जैसे बैटमैन में होता है, लाइक दे गिव पुराना वाला रेफरेंसेस Reference. ना, हाँ. उसी वजह ये वैसे। continuity की थोड़ा सा भोसड़ा कर देते हैं. हम्म पर ये भी है ना, like since it was like for the first time, हम्म it was a major superhero film where the guy is going to have like Chinese origins, right? तो उसके लिए वो लोग, they wanted to be very like Marvel, Disney, they are very good with those things, right? They wanted to do that. और उसके अलावा, if you know about gun kata and all these things, you know about gun kata, right? नो आइडिया। I'll still shake my head though। I'll still shake my head। Gun kata is like, again, Chinese directors figured out how to like, पहले क्या होता था वेस्टर्न मूवीज में, हम्म शूट किया, हम्म खत्म, there's like static shots होता था, like shooting, जंप like they, कट्स वगैरह होता था। नहीं, they'll not run and shoot, they'll all just like stand and aim and shoot, like, you know, कहीं पे दीवार में ऐसे, you know, all हम्म those things. But Chinese directors, they came up with the whole concept of fighting and shooting, हाँ, मतलब इनकॉर्पोरेट करके, कोरियोग्राफ करके, choreograph करके, कोरियोग्राफ करके। that is called gun kata, right? The whole हाँ concept of it. हाँ। और they paid a lot of homage to that. उसमें भी देख, like, they were not just standing there and doing that, They were, they're हाँ jumping, वो सब है ना, it is they're all using the choreographed. whole set, like they're using the tables, like wooden planks and all, जो हम लोग कार्टून में सिर्फ देखते थे कि like टॉम टॉम वहां से दौड़ा, he slipped on a banana, उसमें स्किन में, and then he fell on a jerrycan or something like that. Jackie Chan incorporate those things in his movies a lot। Yeah. इसके बारे में मैंने डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी देखा हुआ है, and he only works with his own core team Yeah, in every movie। and they've been working together for almost 20-25 years again. Yeah। That's a very beautiful team ना, हम्म। concept. Or if you go to check,
सांची और बाकी का जो है ना, इफ यू टू चेक जो एक्शन जो है, अगर आयरन मैन का जो फर्स्ट आयरन मैन है सांची में, तो दोनों में अगर तू एक्शन को देखेगा, हैंड टू हैंड फाइट यू टॉकिंग अबाउट ना? ये हैंड टू हैंड फाइट, you see this one is like Sangchi is much more involved. या ऑफ कोर्स You feel like हाँ it is क्योंकि like हाँ हाँ क्योंकि depth दिखता है हाँ भाई. क्योंकि the people involved in Shang-Chi, they belong to those kind of films. Like they are well choreographed. They know how to do this thing. They make it easy. नहीं, And on the other hand, there is Tony Stark, who is known for only acting, not for fighting and all. और वहाँ पे जो भी कास्ट वगैरह जैसे था, नहीं हाँ नहीं जैसे कि क्या होता है, uh, what I'm talking about is that fact too, but दूसरा की depth होता है ना, जैसे कि for example most famous Civil War Captain America fight scene. Fight scene is basically two dimensional. You like Captain is there, Iron Man is here, Iron Man, and then there's that fight and camera side में है, right? That is the thing. But Sangchi mein, when there's the fight right between the two person, there's like the camera whole is involvement. panning and all. No, मतलब हाँ whole involvement is हाँ आ रहा है. हाँ So you feel that depth होता है ना कि because the weapon comes closer to the camera. camera, so you feel that अरे तो he's further away, weapon is in front of me, then it moves. Even if it's just for a brief period of second, it's not going to be like this slow. It's going to be faster than this, right? But still, you see that happening, and it gives a depth. It gives a different sense. हाँ of course. मतलब it might have like came in a मतलब टाइम के साथ हुआ है ये. टाइम के साथ चेंज टाइम हुआ. के साथ हुआ है. So it's not their Yeah, fault कि मतलब I know Iron it's Man also because 1 में हाँ and Iron Man was a classic. Come on, हाँ 100%. nobody will forget that. कभी भी नहीं. वो जैक स्नाइडर मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि हमारे उम्र का मतलब हमारे लिए द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज लास्ट का मैं बता सकता हूँ. फर्स्ट का नहीं पता, लास्ट का मैं बता Live सकता हूँ. action. हाँ लाइव एक्शन में हाँ. जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग और इधर एंड गेम. मार्वल का एंड गेम और जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग. Nah. मेरे लिए वही है. उसके बाद तो आई डोंट फाइंड एनी कोई भी मूवी. मैंने हर मूवी देख लिया सुपर हीरो. Constantine, Keanu Reeves का Constantine भी अच्छा है. मैं लास्ट का बात कर रहा हूँ. Okay, लास्ट मतलब अब इस उसके बाद में मैंने कोई अच्छा सुपर हीरो मूवी नहीं देखा अभी तक. सांची उसके बाद था ना. नहीं आई स्टिल फाइट. सांची और एंड गेम को थोड़ी आप कर सकते हो यार हाँ. कंपेयर. आई एम सेइंग कि लास्ट ऑफ द लास्ट. Yeah, we were talking about Sanchi, and at the same time, like you're saying. एनीवेज Anyways, we were also like this ना कि live action के लिए Marvel last to last end game for you and Zack Snyder का thing, right? But when it comes to animation, like I was saying, DC मेरे लिए अच्छा है. हाँ Animated डीसी में मार्वल में तो उतना कुछ निकाला भी नहीं ना. What If series आया ना. व्हाट इफ सीरीज में इट वाज कि आपका बचपन का जो भी आपका इनकॉर्पोरेशन था उसके साथ थोड़ा सा खेला है. But इट गिव्ड मतलब it gave it gave give it. वो नहीं इट गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द मतलब ओल्डर जनरेशन हम लोग के लिए. हाँ. So anyways you were saying See, most probably that is what they wanted to do. हाँ पर जो हमारा 90s का जो cartoons था ना, right? Like if you watched Marvel का ही X-Men series, देखा है ना? नहीं देखा? देखा है. Okay. X-Men, the SWAT cats, है ना? Mask. जो उन लोगों का जो एनिमेशन था तब का 90s का जो एनिमेशन था, if they had done the same thing in 90s animation, then it would have been good. जैसे कि He-Man का भी फिर से after nearly 10 बहुत सालों बाद, okay, maybe almost a decade, more than decade, उसके they started continuation of उसका He-Man का continuation किया, पर animation जो the animation that they're following वो early Still the 2000 same. का मतलब थोड़ा सा रेफरेंसेस है उसमें अभी. references भी है, character sketch वही है, हाँ. little bit changes हुआ है because even story में भी ये है कि 10 बहुत साल बाद He-Man का जो story हो रहा है, right? But जो animation standard जो रखे हैं ना, it is exactly where they left off. He-Man and the Masters of the Universe का जो wherever they left off वहीं से continue हो रहा है. पर What If का जो animation standard है, it doesn't match. तभी के टाइम से. तभी के टाइम पे नहीं match. You look at it, it just looks I mean, horrible. it's look comical. Yeah, it looks comical. It Yeah. looks horrible for me. क्योंकि I grew up
हाँ स्टोरी वाइज, या स्टोरी वाइज अच्छा है, हाँ पर जो एनिमेशन दैट आई एम यूज्ड टू, हम्म राइट, आई डिडंट गेट इट। लाइक डीसी का अभी भी कुछ भी नया मूवी भी आता है, हम्म you'll feel that okay थोड़ा बहुत कनेक्शन है पुराना मूवीज में, if you were to हाँ हाँ आई एग्री बट देन दे आर गुड action इन is देयर also pretty मतलब good. दोनों अपने अपने तरीके से अच्छे हैं ऐसा इट्स नॉट लाइक कि And I have to that is like always there. it's not like DC is better than Marvel or Marvel is better than DC animation का बारे में मतलब they are good in their way But I would like to say हम्म like when it comes to animated movies, हम्म तब DC is better. हाँ of लाइव course एक्शन के भाई लिए DC मार्वल इज have बेटर। more experience no हाँ, लाइव yes एक्शन के लिए मार्वल इज बेटर। हम्म पर अगर कंपेयर करें but तो एपल्स live एंड action में ऑरेंजेस। I want to give this in front of the camera like Zack Snyder has set the bar उससे ऊपर नहीं कर सकता कोई ठीक है एंड गेम में there were details there were easter eggs there were like huge moments but then Zack Snyder came in like a boss dude he came in like a boss Justice League जस्ट ये है ना कि जस्टिस लीग Snyder देयर इज cut नहीं देखा ना आपने that's why he looked blank नहीं देखा। आई जस्ट देखो सॉ यार द फर्स्ट वन, ओके। फर्स्ट Justice League जैक स्नाइडर का कट है so apparently two directors were working कितने कितना लंबा कितना है? थोड़ा लंबा 3 hours 45 minutes थोड़ा लंबा है, हाँ पहले का थोड़ा कितना था? कम है 2 hours something some हाँ, minutes एक but then घंटे का डिफरेंस है। I'm saying you can watch that movie एक के बाद मतलब एक बार देख लिया आपने हाँ, खत्म होते ही आप दूसरा बार देख सकते हो इट्स सो गुड अरे यार जॉन विक का मूवी होता तो आई वुड वॉच इट। बट अभी ऑफ जॉन द विक, कैमरा यू आर टॉकिंग अबाउट सम ओल्ड शिट लाइक गन काटा के बारे में कुछ बात कर रहे थे हाँ, गन काटा वाज लाइक, व्हाट इज दैट गनकाटा was basically a combination of kung fu and gun. Wait, guns involved in kung fu guns. Yeah, like you having fights, it's a right? gun fu It's a gun fu. Yes, it's a gun fu. It's not gankata. Shit. Yeah. Sorry. so Yeah, it's gun fu. Gun fu. Gun fu था, and the whole concept started from Chinese directors. वो पहले बोला भी था, hmm. and you might think like अरे यार मुझे पता नहीं है हाँ कुछ मुझे भी। पता नहीं बट we all have seen it We've all seen it. we'll, Like जैसे कि अभी जॉन not विक में, just Hollywood lovers also in Bollywood we have seen this in Mithun ka movies and all में यार मिथुन तो छोड़ दे बे, सबसे इन योर फेस दैट यूड सी इज मैट्रिक्स का जो सीन है ना, पता है, लाइक हम्म फर्स्ट मूवी में हम्म कियानू रीव्स एंटर ना, हाँ वो वाला फर्स्ट मूवी, हम्म कियानू रीव्स एंटर्स दिस लॉबी, हम्म कॉप्स वॉप्स है वहाँ हम्म पे, है ना, पुलिस वुलिस है वहाँ पे, Agent Smith दे Agent एंटर, Smith एजेंट्स हाँ नहीं, कॉप्स नॉर्मल कॉप्स है, दे okay एंटर बैग्स फुल ऑफ गन्स, हम्म रिमेम्बर, हम्म और वो बॉडी चेक होता है, मशीन है, दे एंटर लाइक यू नो एंड दे से हम्म लाइक डू यू हैव एनी वेपन्स, एंड I am the weapon fuck off एंटर एंटायर सीन इन दैट फाइट। अरे यार एक मूवी है ना, दीवाना so समथिंग, what how is that दीवाना, gun fu like दैट इज लाइक, when did you realize that you know what this is not just hand to hand combat this is not just gunfight this is gun fu वेल अरे यार इसके लिए बहुत माथा मालिश करना पड़ेगा। इट स्टार्टेड लाइक जब कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, डीएफए में पढ़ रहे थे ना, so we had to study lot of old cinema and evolution of cinema and all those things. तब that was when I realized अरे यार this is different। पहले का जो होता था, बताया ना, जो पहले का जो फाइट भी रहता था, you just person would be just static and they would be waving the weapon, right? guns भी static going off होके, the topic I guess नहीं, हाँ it's ठीक है there, ठीक है right? no we are going off the topic bro we were पर like that is when I realized कुछ changes हुआ है, and it was much later, maybe like 3-4 years ago, also it came in a very subtle way हम लोग को पता ही नहीं चला पता ही नहीं चला। जब मतलब that से कब हम लोग गन फाइट विद कंग फू फिर लाइव एक्शन में आ गए हम लोग को पता भी नहीं चला और इट वाज सो स्मार्टली डन it is very smartly done, and not just that कि हम सोच रहे हैं कि अरे यार ये तो चीज हमें पता नहीं होगा यार, नहीं हमने देखा नहीं है, मे बी ओनली स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द पीपल मे बी सीइंग इट, बट नहीं यार, जॉन विक सबने देखा सबने देखा हुआ है, जॉन विक में था, मैट्रिक्स सबने देखा, छोड़ भाई जॉन मैट्रिक्स विक। मैट्रिक्स तो हाँ हाँ इट वाज अ कल्ट मूवी हाँ, फर्स्ट टू पार्ट तो आई थिंक एवरीबॉडी हैव मे बी seen द it एनिमेटेड मैट्रिक्स जो है वो नहीं देखा there is होगा। animated matrix as well oh fuck
वो किसी ने नहीं देखा होगा. और एक चीज बोलूंगा, ब्लो योर माइंड. एनिमेटेड मैट्रिक्स अगर नहीं देखा होगा, पर क्योंकि मैट्रिक्स का तो एक अक्षय कुमार के मूवी में सीन टू सीन वही हॉल वाला सीन कॉपी किया है. बोल सकता हूँ किसमें है. आई थिंक इट्स जानी दुश्मन. आई थिंक सो. नहीं, जानी दुश्मन में नहीं. देन एक एक है, ही एक बंदा अक्षय कुमार का मास्क लगा के फाइट करता है. है. हाँ, होल सीन कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी है. कौन सा गंदा फुक्का चला रहा था इन लोग मूवी में. और see, not just that, like every movie nowadays, right? हम्म. अभी का जवान में, हम्म. राइट, पठान में, एंड इवन ये रॉ का क्या था यार, टाइगर. टाइगर. हाँ, they have some. They They have have some elements of, stole something from a lot of movies. no, not stolen, it is Adaptation. 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 Indians, we don't steal. We We adapt. adapt. तो ये concept, yeah, we have seen it. It's just that we have just not thought about it. And again, to clarify, it's not gun kata, it's It's gun gung fu. fu. Gun fu. Kung Gun fu. fu with guns. Gun fu. Gun fu. So do you think which movies do you think कि India has incorporated वो gun fu वाला in a best way? एक movie in a best way, एक Recent one? movie in a bad way. Worst way possible. Worst way possible. कि मतलब वो incorporate मतलब gun fu भी नहीं है. That's a goo fu. There's goo and there is what the fuck. Okay, so यार उतना मैं हिंदी मूवीज देखता नहीं, ठीक है, पर फिर भी the recent ones that I like I said, जवान और पठान में. They're cheated or like No, it was good. it was good. It is Hand to good. hand. हाँ, 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 I also find it. Okay, man. ठीक है. और साउथ के मूवीज में लाइक थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है, बहुत ओवरली थोड़ा एग्जैजरेटेड थोड़ा होता है, मत बोलो यार, इंसल्ट मत करो. ओवरली एग्जैजरेटेड हाँ. होता है. इट इज वेरी एग्जैजरेटेड ओवर देयर, बट इट इज स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग टू क्या वॉच. मचा क्या बोलती तुम. आई थिंक दैट बट जोक्स अपार्ट इट वही इज वेरी चीज इंटरेस्टिंग टू इट वॉच. वर्क्स आउट फॉर साउथ इंडियन ऑडियंस आई गेस. यू द एग्जैजरेशन. व्हाई डू यू थिंक इट वर्क्स आउट? व्हाई डू यू थिंक इट वर्क्स आउट? I have a theory why it works out. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मतलब ये मेरा थ्योरी है, ऑन द स्पॉट मैं बोल रहा हूँ. मे बी आई विल रीथिंक अबाउट इट एंड देन आई विल हैव अ डिफरेंट थ्योरी. Like the South Indian people, they are very serious with their life, and the only entertainment they get is from the screen. And when they see over lively characters, over the top contents, they kind of feel like Larger than life larger characters. than life sort of a character. That's where they like, fuck this. It's like an escape for them. Yeah, you're pretty close to it. Not exactly there, but you're very warm, almost there. Yeah. मतलब मेरा theory ये है, and this is not just my theory. I interacted with a lot of people. वहाँ पे जैसे कि मेरे दोस्त लोग जो है, जब मैं चेन्नई में जब था और बैंगलोर वो सब ट्रैवल कर रहा था ना मैं साउथ में, and I would meet a lot of people, and when I had a talk with them regarding movies, what kind of movies you would watch, they say small talks, and they would just tell me South Indian movies. They say, "Nah." And the reason I found out was, why do they like those things? When I sat down and I thought about it, they are very, like you said, very serious. Very serious. Very serious. वहाँ पे there's no bullshit, right? And it's very precise. Like nobody cares about your connections. Nobody cares about anything. You just cares about your skill, your experience, right? Even that kind of very precise thing. उन लोगों का logical ज़्यादा रहता है. And if you're people like that, you have this very serious life, right? Most of them are like office workers. Most of them are like midnight oil burners, the 9 to 5 ज़्यादा रहता है. तो if you would think, like if you would live life like that, तू हफ्ते में एक बार जाके मूवी देखेगा. That's where you want to like lose your shit. No, do you want to sit there and be like, हाँ यार सोचना Serious है. movies देखना है. नहीं ऐसा तो नहीं बैठ के तुझे एनालाइज करना है कि हाँ इसने ये क्यों किया था, ये क्यों हुआ था.
I don't think you want to do that. You want That's to what I'm just saying. spend the Like time. it's whenever they are going for a Escape. movie, they want to escape their serious life. Exactly. वही बोल रहा हूँ कि you It's are not that close to. they do not watch serious movies. They do watch. They do Like watch and they do appreciate more than us. some of the But then, movies were like huh, some of the South Indian huh, movies are very very serious. very serious. But for me, like I also watch South Indian masala movies once in a while. I do that just to get all those serious things out of my head. You just watch it and like there's nothing to think about it. You Mm-hmm. don't go back and There's like no logic. there's like connection क्या था. हाँ, उसको एक पंच मारा तो वो इतना दूर कैसे चला गया? You don't think about it. Like You you are just going there just to lose your mind, and then just to enjoy the moment, the loud music, the loud dance, the loud, colorful beautiful everything. Yeah, beautiful actresses. yeah. क्या बात? मजा आया ना बात करने में. मजा. अरे यार where did we start? हम शुरू कहाँ से किए थे? We started from कि what were the shows we used to watch when we 90 were shows kids? ना. Yeah. We started Friends. Then कहाँ से कहाँ यार South Indian movies. South Indian movie बचपन में भी देखते थे but still like whole 90s, right? It is nostalgia, like back in this feel, nostalgia. अरे यार मजा आया. You should keep calling me for these things. But then I have blocked you, so sorry. और But ये ब्लॉक क्यों किया on था? हाँ नहीं. You kept calling me. Job खोज दे. Yeah, Yeah. But job hunting is very I had a difficult. good time talking to you about our 90s thing. Mm. Like I can never stop talking about 90s things. We should like there's so many things to talk Yeah. about. Yeah, our childhood was Very like fascinating. like Yeah. eventful, right? There's Eventful. That's the word. right I'll say that. Eventful. and sports we could we want to talk about. I want to talk about the sports that we played, like gilli danda and Yeah. all this thing. Like, Yeah. and Fat guy talking about sports. So exciting. you know Yeah. how He wants to listen to it as well. Huh? she wants to. It's 21st century. It's it's not she. It's they them. You were- She's not where is even the in the where is the frame. dinosaur? जो भी हाँ. Yes. Anyways, bulana फिर. Yeah, I You had know, a we good can time. have this conversation again. Maybe right now, this is it for us. We'd like to see you guys again back Yeah, I had a good next week. time. Yeah, I had a good time. We I'd could like do to. this Yeah, you definitely can come again. back here again, Mhm. and you guys can also come back. Mm. You know, we can have this whole conversation all over again. We can go back to 90s, and we can also talk about 70s because 70s is very interesting for me as a musician. Musically, it was awesome. The best period of all time. But that is For the topic for our next episode. or I hope you guys enjoyed if not because next episode, yeah, maybe the future yeah, episodes. yeah, yeah. These things are not like If we don't. you guys have any feedback, like what we should talk about and what are the things we should not talk about, please let us know in the comments. And if you have your own favorite, Mm. 90s shows that you Mm. want to talk about, so you want to tell Yeah, us about, yeah, and we would go back and watch those yeah. and tell you our feedback about it. Of course, 200%. Let's do this, bro. Let's even if the comments do not come, let's talk about those things with our friends, with Hmm. your friend circle, Hmm. and then Let's go come up with revisit those. those unknown series or unknown shows which you have not watched but your friends have watched, and then let's watch it together and like come up with our own you know how do I Segment how kind do of a we thing, yeah like, yeah yeah so once a week we are going to yeah talk about this. yeah yeah since we are freelancer, we are always free, we can do that at least, I guess. DDOs. Yes. With that, thank you so much for bearing us. Please follow us, Please follow us. like this video, comment on this video, share it with your friends, and make sure that other people also waste their time, just like you just did. So With that, let's get united and yeah, waste time waste together. time together, bro. Like, Let's what go. else we have got to do? And करना क्या है? chalo, Thank you so much. see you in the next video. Adios. Adios, amigos. Do not Hasta la cry. vista, baby. चलो, I'll अच्छा था. be back. No, I'll I'll be be back. back. I'll be back. Are you done? Yeah. इसको भी दिखा दे like, hey, come on. Yeah. Hey, Shiro.
She has been a very good companion to us. Like she has been there throughout our whole podcast. If she can bear, why not you? Give us a try. Subscribe.